ठीक है, आप स्टार्ट करो। वैसे तो कल और लेट हो जाएगा, नहीं तो बहुत you're supposed to not moderate this. ठीक है, उसके HOP है इधर, you have to guide him. We will not be guiding. HOP है तो कैसे present them. So it's up to you to find out what he has done, what he has not done. ठीक. Patient Mr. X, 22-year-old male, unmarried Muslim, completed his polytechnic course in 2021, currently not working, lives in a nuclear family belonging to lower middle class socioeconomic status, resident of Roorkee. Identification mark, mole on back, 1x2 mm, size 4 to 5 centimeter away from the chin, circular in shape. Informant history is given by patient and patient's father, who has completed his studies till class 8 and is a driver by occupation, intermittently stayed with the patient. Chief complaints: history of smack intake since past 1.5 years, average intake 0.5 grams per day, last intake was 2 days back. History of BD smoking since past 1.5 years in a dependence pattern, amount being 1 bundle per day. History given is reliable and adequate and is clear, coherent, consistent, and given in a chronological order, corroborated among the informants. Complaints are insidious in onset, continuous and deteriorating in nature, and duration of illness is 1.5 years. Precipitating factors could not be evaluated. HOPI. ठीक है, अब तक उसको मैट है, ठीक है। Maximum. HOPI में बताएगा ना, तो HOPI में कवर करेगा। HOPI तो स्टार्ट ही नहीं हुआ अभी तक, क्या है क्या? फिर कंप्लेंट्स यार, पेपर रिपीट करो। The chief complaints and history of smack intake since past 1.5 years. It's taking continuously since past 4 months. Average intakes are 0.5 grams per day. And sir, last intake was 2 days back. Sir, history of BD smoking since past 1.5 years in a dependence pattern. So both of them started at the same time. Yes, sir. Absolutely same time. That's okay. Usually you will find longer intake of tobacco and legal substances, shorter intake of illegal substances. But was it at the same time? अगर same तो हो भी सकता है. And why you to mention कि मतलब dependence pattern में है nicotine intake? तुम्हें कैसे पता dependence pattern है? वो तो अब आगे history चलेगी तब हम prove करेंगे dependence pattern है. एक बार फिर repeat करो opioid intake की chief complaint. Sir, history of smack intake since past 1.5 years. ठीक है. Sir, average intake 0.5 grams per day. So do you need to mention everything here? तुम बताओ स्मैक इंटेक और आप आगे बताओ वो एसओपी में एवरेज इंटेक क्या है क्या नहीं एंड व्हाई यू नीड टू मेंशन लास्ट इंटेक हियर आल्सो. तुम बताओ बस स्मैक इंटेक फ्रॉम लास्ट 1.5 इयर्स का चीफ कंप्लेंट पेन एब्डोमेन टेक तो छोड़ दे. पेन एब्डोमेन बताते हो क्या कब से, मतलब कब से ये बताते हो, लेकिन पेन एब्डोमेन लास्ट कब हुआ या कंटिन्यूस है या नहीं है या एवरेज पेन कितने घंटे रह रहा है ये तुम बताते हो क्या? फीवर कितने देर रह रहा है बताते हो चीफ कंप्लेंट? बस फीवर है साथ ही. So smack intake 1.5 years. बस खत्म. Average intake. And how can you say it is a dependence pattern? What is dependence pattern? Dependence pattern उन्होंने पता है, उनको पता है dependence pattern क्या होता है. So it has to be in patient's language. मतलब basics तो नहीं छोड़ने हैं. Dependence pattern तो हम लोग जब तक हम formulation तक नहीं पहुंच सकते पूरी हिस्ट्री में कहीं नहीं आएगा. Unless patient एक knowledgeable है, उसने खुद ने बोला कि मैं dependence pattern में ले रहा हूँ. ठीक है, मतलब अगर patient ने अपनी language में use किया तो maybe. In why we to mention dependence pattern? Nicotine intake dependence या tobacco intake whatever dependence pattern तो हम कैसे prove करते हैं? तो smack intake 1.5 years and क्या बोला सर? BD smoking. BD smoking 1.5 years. तो BD smoking उसने वो चीफ कंप्लेंट के लिए आया था. उसने खुद बोला कि वो BD intake मतलब उसका प्रॉब्लम है. नहीं सर, BD intake मतलब उसने वो उस प्रॉब्लम के लिए आया था हमारे पास जब उसने मेंशन किया कि ये भी प्रॉब्लम है, उसके फैमिली ने मेंशन किया.
Do we need to end it in simple method? Sometimes it happens कि पेशेंट तो कुछ और कंप्लेंट बता रहा है लेकिन कंप्लेंट हमें डिसाइड करनी है, ठीक है, मतलब पेशेंट तो अगर पे नहीं आ गया वो तो हेडेक बता रहा है आपका। आगे बताओ। समटाइम्स ऐसा ऑफकोर्स होता है, कैनाबिस इंड्यूस साइकोसिस है, वो साइकोसिस की वजह से है, लेकिन हम कैनाबिस की मेन टिप कंप्लेंट नहीं है, टिप कंप्लेंट अभी है जब आए थे सर, उससे एक दिन पहले ही आया तो क्या टोबैको स्मैक वो आया तो स्मैक के लिए ही है ना ट्रीटमेंट, तो स्मैक तो ट्रीटमेंट में आई है कि बियॉन्ड डाउट, इसीलिए तो आया है, वो डिडॉक्सिफिन के लिए तो आया है, कोई पेशेंट दे रहे हो तो वो तो आएगा ही आएगा, उसी ट्रीटमेंट के लिए वो आए, बट दे हैव मेंशनड कि दैट इज आल्सो अ प्रॉब्लम and or we think it's a significant problem leading to the patient's visit to the hospital, then it has to be reviewed. See, मतलब अगर हम अगर अल्कोहल होता मे भी और वो कहीं ना कहीं अफेक्ट करा होता तो मे भी मतलब probably in this case there's nothing like right or wrong, okay, but if you will present this in examination और आप उतना ही हिस्ट्री स्मैक का बता दोगे उतना ही हिस्ट्री टोबैको का बता दोगे, एंड टोबैको इज सो कॉमनली abused legal, ठीक है, and may not be affecting this particular patient that much as is the smack, तो अगर अभी कर चलो सब 7 केस है, मान लो केस स्किज़ोफ्रेनिया का ही है और वो भी 1.5 साल से स्मोकिंग कर रहा है, तो क्या तुम उसको चीफ कंप्लेंट में रखोगे? वो उसका रीजन नहीं आने का और वो कॉमन है, अफेक्टेड है, और अगर उतनी हिस्ट्री हम स्मैक निकोटीन की बताने लग जाएंगे तो मतलब बहुत केस में ठीक है, तुम इसमें कंटिन्यू कर लो जैसे तुमने किया है, बट यूजुअली अगर हम जो पर्टिकुलर हमारे पास पेशेंट जिससे आता है और उससे रिलेटेड चीफ कंप्लेंट जो हमें लगती है हम वही चीफ कंप्लेंट मैच करते हैं chronological order। सर अगर ओकेजनल इनटेक है किसी का तो मेंशन कर, अगर ओकेजनल इनटेक है और वो उसकी मतलब जो करंट विजिट टू द हॉस्पिटल अफेक्ट कर रहा है तो करेंगे नहीं, थोड़ा तो ये मतलब हमारी क्लिनिकल जजमेंट होती है, समटाइम्स थिंग लाइक राइट और but it has been clearly mentioned what should be mentioned in chief complaint. It should be the main complaints which is bringing the patient to the hospital and is affecting patient's current illness. और वो chronological order में complaints तो किसी बहुत हो सकती हैं, मतलब लेकिन अब कोई अगर से डेंगू के लिए आया है लेकिन उसको विजन प्रॉब्लम भी हो रही है तो आप विजन प्रॉब्लम की थोड़ा मैनेज करोगे, ठीक है, लेकिन ये कंप्लेंट हमारी ही है, मतलब हमारे डिपार्टमेंट की ही है निकोटीन डिपेंडेंस, अगर पेशेंट फैमिली स्मैक के लिए आ रहा है हमें क्लियरली है उसके लिए आ रहा है तो बहुत मतलब हिस्ट्री एफर्ट हो जाएगा अगर हम निकोटीन ऐड करें, लेकिन अगर तुम्हें डायग्नोस्टिक कंफ्यूजन तुम बता रहे हो तो सर वो वाला केस, अच्छा वो केस नहीं है, ठीक है तुम कंटिन्यू करो। सर HOPI patient was apparently well 1.5 years back when he was in final year of his polytechnic course. He was carrying out his normal daily activities and was making friends in college. It was then when he started going out with friends and would spend most of his time with them to an extent that he started coming home late, even after being scolded by his parents. As reported by the patient, there was an incident when his friends mixed some illicit substance in his soft drink. After consuming it, he felt very lightheaded and relaxed, which was unlike before. He had an idea that something was wrong with his drink, but he liked the experience, so he continued consuming it anyway. Then, after 20 days, while he was sitting with his friends, he saw them taking smack on a foil paper with the help of a chaser, and out of curiosity, he also tried it. He reported similar feelings of lightheadedness as was experienced before. Then he asked them to teach him the correct method to take SPAC. They taught him to take the SPAC using a foil paper.
They kept the smack on foil, heated it up using a lighter, and then he chased the fumes using a chaser they made using a 100 rupee note. Then the very next day, he had a craving for for similar feelings, so he went back to his friends and requested them to procure some smack for him, for which they charged him around rupees 2000 and gave him approximately zero point 0.5 grams of smack, which he consumed in a single day. Then gradually over the next 1 month, he started consuming smack daily in the evening after his college hours. His mother noticed some change in his behavior. He started coming late than usual and sometimes would not care to go back home and preferred to stay with his friends. He started appearing very drowsy to his mother, and when they would ask him, he would get irritable and would start shouting at them, which was contrary to his usual behavior. Initially, he used to manage his expenses with his monthly pocket money, but then he started asking for money on a daily basis. And when his father would ask him, where did he spend all the money, he would get agitated. Then gradually, his parents noticed that he would leave early for college, and as reported by the patient, he would ask his friends to procure the substance early in the morning before the class. He would appear drowsy in the class and would have difficulty attending lectures. Then gradually, as he was out of money, he started lying to his parents that there was an increment in his college fees, or he would also ask for money for various extracurricular activities in college, which he never used to participate in. Gradually, he started taking smack at home, and he would spend most of the time in his washroom. One day, while he was consuming it in his washroom, her mother saw some smoke coming out of the washroom. When he came out of the washroom, she searched him and found out a foil paper with a brown colored substance and lighter in his pocket. She got anxious and informed his father about the incident, who was working in Saudi as a cab driver. As patient's mother was alone and was unable to decide what to do in that situation, she asked him to not to go out with his friends, but he refused. He was very adamant. So his father came back to India and he forcefully admitted him to a mental health care center for 1 week for the management of the symptoms he was experiencing after discontinuing smack, like generalized body ache, watering from eyes and nose, loose stools, yawning, goosebumps, घबराहट, restlessness, palpitation, and decreased sleep. Which he was started on an anti-craving agent, which he consumed for 15 days. Then he stopped taking the medication as he reported that he was maintaining well without the medication for the next 6 months. Everything was going fine, but one day he met his friends when he went to the market to purchase some household items. He met them after a very long time and they convinced him to take smack just once. But then he was not able to control his urge and at the same time was forced by his peers to procure the substance. As his parents knew about his substance taking behavior, his parents refused to give him any money. So he started taking money from his friends and relatives. He then continuously consumed the substance for the next 4 months, and parents were not aware of the situation as he was living with his friend because he was preparing for an entrance exam. He was in debt and was not able to return back the money which he borrowed from his friends and relatives. He went back to his parents as he realized his mistake, following which he was again admitted in a mental health care center. Sir, वो admission sir अभी जो यहाँ पे Sir, negative history, no history of any other illicit substance intake, no history of any abnormal body movement, no history of any significant head injury, no history of any low mood, self-harm, thoughts of self-harm or attempts of self-harm, no history of suspiciousness, no history of self-muttering and self-smiling, no history of hearing things not heard by others, no history of seeing things not seen by others, so no history of over-talkativeness, tall claims, grandiosity, racing thoughts, increased appetite, decreased need for sleep, increased libido, over-familiarity or over-religiosity, no history of repetitive hand washing, no history of repetitive door and lock checking. निकोटीन डिपेंडेंस तुमने लिखी था वो भी हिस्ट्री मतलब वो मेंशन थी चीफ कॉमन तो तुमने मतलब एचपी में लिखी आप तुमने मेंशन नहीं किया और यू डिडंट राइट एनी वो जब एचपी में लिखी थी चीफ कॉमन तब उसकी हिस्ट्री तो बनाते जब अगर चीफ कॉमन तुमने लिख ली थी और मैंने थॉट दैट कैन बी चीफ कंपेयर सो एटलीस्ट
जब चीफ कंपोनेंट को तो आपको अपलोड करना ही पड़ेगा. That's why you have to choose chief components carefully, which are relevant, which are the reason for presentation to the hospital, and which are affecting our diagnosis and our management. Okay. So that's why you should choose them carefully. But once you have built it, you have to explain. It is very surprising that both of them started at the same time, nicotine abuse and opioid abuse. You guys spend more time. No problem, but still, उसमें you just explain that तो लोगों को पता है, हमने पता है, हमने इतना बात नहीं किया होगा उसके बारे में. But अगर आप इसके presentation में अगर आपका independence है नहीं है, तो आप देखो action करना. वो स्मैक था नहीं तो ये चीज क्लियर नहीं हो रहा है. तो स्मैक था ऐसे कैसे पता स्मैक कुछ उन्होंने डाला कुछ नहीं डाला. ज्यादा दिखाएगा नहीं, थोड़ा मोड़ा दर्द हो गया कहीं से ब्लड में चला गया ठीक है, तो उसका प्रोसेस है देखकर, लेकिन आएगा थोड़ा बहुत दर्द होगा ही कहीं से. मतलब ये वो बता रहे थे वो स्नैक ही था. यस सर. थोड़ा बहुत अब्जॉर्ब होगा, थोड़ी बहुत नहीं. तो अभी तुमने लास्ट में तो बता रहा था ना क्या सिम्टम्स है क्या नहीं है. मैंने 4 मंथ से वापस इंटेक स्टार्ट हुआ, पेरेंट्स को दोबारा बताया और एडमिट हो गया. तो लास्ट इंटेक ने बताया अब कब है. ठीक है. नहीं मैम, उस टाइम पे नहीं मैं 15 to 20 डेज तक ऐसे ही चलता रहा. उसको कहीं ना कहीं जैसे उनको रियलाइज हो गया था कि कुछ है इसके, लेकिन ही वाज लाइकिंग इट, सो इट कंटिन्यू डूइंग इट. तो उसके बाद में 20th डे पे उनके फ्रेंड्स ने उसके सामने फॉइल पे करा, तब दे रिवील्ड कि हम इसमें स्मैक कर. ऐसा ना एक चीज हुआ हमारे चल रहा है. ये बच्चों के स्कूल के बाहर जो पानी का तो पाया गया, उसको बाद में चीज को पकड़ा था, उसमें मिला था. तो बच्चे उसी के पानी पी के चले गए, पीते थे वो खाते और बाकी उसके नहीं करते. नहीं ये वाले इंसिडेंट तो क्या है वो उसमें स्पेसिफिकली मैंने पेयर हर्ड इंसिडेंट्स ऑफ दिस ऑक्यूर्ड इन पान. वो आई डोंट नो कितना एल्गो होता है उसमें. एक चीज बट मैं रेगुलर ले रहा था. Yes, sir.
और सर एक डाउट और भी क्लियर भी हो गया कि सर जैसे स्लैक्स भी एक्सपेंसिव होती है तो 15-20 डेज तक उसके फ्रेंड सर उसको फ्री में करवाते रहे उसको बताया। तो तुम्हें देर करना था पेशेंट तो मैंने पूछा वो उसने कुछ बताया। सी अभी एचओपीआई के बाद आपका डायग्नोसिस क्या है? कोविड डायग्नोसिस क्या है? सर मेंटल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर ड्यू टू यूज ऑफ ओपियोइड डिपेंडेंसी withdrawal state and So all is the criteria of this particular disorder has been fulfilled in your HOPI. बताओ क्या क्या क्राइटेरिया फुलफिल तुमने HOPI में कर दिया? compulsion to take the drug. ठीक है, और सर सर उसके बाद neglect of day-to-day activities सर but neglect or mention. sir initially he used to go to his college in intoxicated state but then sir he stopped his classes. It is neglect. Yes, yes, it is basically is possible. So it is neglect. You have mentioned that. You mentioned that he used to go early to the college and he used to take snacks before going to the class. And did mention that he used to be very say pros in the class? Did mention that. Anyway, there are two things: whether neglect of day-to-day activities is there in your history or not, and second thing, do we need neglect in day-to-day activities? So we need neglect of pleasurable activities. So anyway, ये भी doubtful है what other categories are in your category? Tolerance कहाँ पूरा किया आपने? कहाँ mention किया tolerance? Amount के बारे में failed to mention कि what was the amount initially and then how it increased and how much it got increased. You started with spending of 2,000 per day with 0.5 grams, but you were not being able to mention when it got increased and to what amount. As you mentioned by number of clients for the amount of spending for the cost, maybe, but how the tolerance was mentioned. There was one withdrawal symptom was mentioned before then it was admitted to what else? एक बार मेंशन किया था but you should have mentioned consistently. ये नहीं कि एक बार उसे थोड़ा you should have mentioned it like whenever he was not taking the substance he used to start to have this kind of system that forced him to go for the substance and make extra efforts to procure it. इसी में दो क्राइटेरिया पूरे हो जाते हैं. वो तुम्हें मेंशन करना चाहिए था. मतलब कब उसने ऐसा किया? एक इंसिडेंस जब वो ऐसा कि उसको अब नहीं मिला तो उसको थोड़ा सा विड्रॉल स्टार्ट हो रहा है या इतना विड्रॉल आ गए and then he did some activities, spent so much of time in looking for the substance or procuring for the substance or taking the. ठीक है, तब दो क्राइटेरिया पूरे हो जाते हैं. मतलब दिस although it is not that कि आपको हमेशा ICD क्राइटेरिया देख के हिस्ट्री बनानी है. So it is very very deliberately designed HOPI कि हम बता तो पेशेंट की कंडीशन रहे हैं लेकिन ऐसा नहीं कि आप क्राइटेरिया से पूछ. जैसे आपने बताया पिक्चर बनाने की कोशिश की, that is absolute the way it should, but and also you should keep in mind what we are looking for. मतलब जो तुमने बताया पहले वो फ्रेंड के साथ ले रहा था, that is the fine way, that is the proper way कि हमें समझ में आ रही है हाँ वो फ्रेंड एक्चुअली उसकी ड्रिंक में मिला रहे हैं या वो फ्रेंड को कह रहे हैं किसी को ले लो या फिर वो अपने फैमिली मेंबर के साथ एजिटेट हो रहा है. Here that is the way it should be, and we should also keep in mind what criteria is. और कोई क्राइटेरिया जो तुम्हारी हिस्ट्री में फुलफिल हो गया? डिपेंडेंस पैटर्न विद विड्रॉल करंटली. विड्रॉल तो हुआ ही नहीं, तुमने एडमिशन करके छोड़ दिया. या तो तुम आगे अगर तुम्हारा आगे है कि स्टे इन द हॉस्पिटल का तुमने एक हेडिंग बनाई है, बट एनीवे ठीक है आगे चलो कंटिन्यू करो. Sir, treatment history, sir, patient was admitted in September 2021 for 1 week in a mental health care center for similar complaint. And sir, he took tablet naltrexone 50 mg 1/4 tablet OD for 15 days, but then he stopped taking it.
Sir, he also took sir tablet buprenorphine 2 mg twice a day for 1 month in February 2022. Sir, past history. Sir, there was no significant past history. Sir, family history. Sir, there is history of hypertension and diabetes mellitus in mother. Sir, there is also history of demise of younger sister when she was 15 days after her birth due to birth complication, and she was kept in an ICU. Sir, patient is closest to his mother, and sir, emotional head of the family's brother, and sir, the financial head of the family's father. Sir, personal history. Sir, birth history. Sir, normal vaginal delivery at home with the help of a dye. Sir, birth weight was 3 kgs. Sir, immunization was complete. Sir, all developmental milestones were achieved as per age. Sir, childhood history. Sir, there is no history of any hyperactivity, inattention, impulsivity, repetitive bullying in school. Sir, stealing things, lying, disobedience. Sir, he was shy during his childhood, and he would share his toys with the other children also. Sir, scholastic history. He started going to school at the age of 5 years and was sir directly given admission in first class. Sir, he was a very good student and scored 59% in class 10 and 50% class 12 in Sir Uttarakhand board. Sir, there is no history of violence in school or suspension from school. Sir, sexual history. Sir, there is history of unprotected intercourse 2 years back with a college friend. Sir, forensic history. Sir, there is no history of any legal consequences like police or court case. Sir, pre-morbid personality. Sir, social interaction. Sir, relations with family members and friends were good. Sir, intellectual activities. He liked reading books and liked to play cricket and going to gym. Sir, mood, his pre-morbid mood was sir, cheerful, relaxed, optimistic, satisfied, and he had control over his feelings of love, anger, frustration, sadness. And sir, mood was stable. Sir, character, sir, he was responsible. Sir, interpersonal relationships were good. Sir, he was not that religious. Sir, energy and initiative. Sir, he was energetic and his output, sir, was maintained. And sir, there is sir, fantasy. There is no history of any daydreaming. Sir, habits, sir, there was normal sleep, normal appetite, and sir, normal power. Sounds great. उसके बाद है, उसको मैंने कहा था नहीं किया है, उसके बाद है ताना बताया micro intake to you या तो पर्सनल मैसेज करो चेक करना मैसेज करो मैसेज चेक कर ठीक है तो बैकअप की mostly substance use cases. Present history is very important. Since all the other negative things will hide out, obviously, it's not as complicated as a cycle that you're trying to find out. The milestones in the history of substance use. There are milestones. First, the backbone initiation, testing one, testing two, testing the PD data. What now, not at the stage of learning, maybe at the later stage. There is a recognition by the elements of maybe some percentage. So first of all, you could take a very formal try that when then the person is technique are more elaborate. And as sir said, the points obviously you can't go in with a pre set of notions that these are the things, but still you do some concepts of this thing is there, I'll describe this one. Like tolerance, tolerance is a very, very easy thing to describe, and it offers in mostly in substances. Okay. So that is the same amount पे कम इफेक्ट या फिर ज्यादा अमाउंट पे सेम इफेक्ट ये जो प्रोग्रेशन हो रहा है ये है या तो अच्छी तरीके से describe कर
मेल है Yes. female substance serious there's something called Elizabeth female substance will go and clean up so that you can also the female substances बाद में आएगा इसके अलावा जब नेगेटिव कॉम्प्लिकेशन होती है जैसे ये तो चलो ओपियोइड है अल्कोहल का ज्यादा देखते हैं इससे कॉम्प्लिकेशन भी डेवलप करता है जो क्रॉनिक लीवर डिजीज या फिर स्टिग्माटा जो डेवलप करते हैं सीजर तो वो सब चीजें हो गए अदर सब्सटेंसेस में डेवलप किया है मूड डिसऑर्डर्स किया है साइकोस का भी कोई इलीगल The forensic history. बट फॉरेंसिक मतलब तुमने अलग से उसको लेकिन उसको नेगेटिव Personal history में सर. नेगेटिव हिस्ट्री में उसको रूल आउट कर सकते हो कि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल कुछ किया था हम लोग कभी कभी ओपियोइड के टाइम में सब ये जो ड्रिंकिंग वगैरह का होता है तो इनकार्सरेशन का कोई हिस्ट्री है नहीं मतलब इनकार्सरेशन मतलब जेल में रहना ये कोई हिस्ट्री नहीं है वो रूल आउट करते हैं ठीक है और ये चीज है नेगेटिव हिस्ट्री के खिलाफ होगा ठीक है लाइफस्टाइल सब्सटेंसेस ज्यादा अच्छा लाइफस्टाइल बनता नहीं है जनरली बना सकते हैं It is useful for academic and learning purpose, but exam purpose के लिए मतलब एग्जाम में anyway but anyway वो तो प्रैक्टिस की बात है सब्सटेंस का केस मिलना तो बहुत अनलाइकली है अगर you talk about exam मतलब but you have must relevant practice with life कोमोर्बिड सब्सटेंस हो सकता है मतलब मान लो साइकिल का केस मिले comorbid of course fine so और फिजिकल एग्जामिनेशन के एग्जाम subnormal इतना देखते हो कि you can do a lot so much so many variety you see you think that everything is smack but still there are so many varieties of the way they take it the way they go into dependence everyone doesn't go into dependence the same way or the same relation or the same time okay. So everyone's constructs are different those things will come later but still when you take yes that's it See, आप मेरे को बताओ कब मैं मतलब when इसने मतलब when we will say कि क्या सब्सटेंस है कैसे हम डिसाइड करते हैं किस सब्सटेंस क्या है इसके लिए बहुत तो independently once it says once dependence always dependence किसने कहा who says okay Currently, absolutely, but past history is of dependence. Then you have to mention it. Like, but इसके ऊपर discussion हुआ था तो that like you can mention it in past history. But so dependence अगर एक बार आती है तो diagnosis में तो some diagnosis like dietary diagnosis in 4-5 साल अगर हम लोग पूरा हुआ है तो जो करेंगे मतलब पास्ट हिस्ट्री में नहीं प्रेजेंट में इसके डायग्नोसिस हां ऐसे भी बैठी है ना सर्विसिफाई वाला ये पेरेंट्स बैठे हैं
Yeah, it is such a currently absent. Most dependents. आईसीडी में ये भी लिखा हुआ है कि जो सब्सटेंस मेन के लिए है ना आपको डायग्नोसिस वही बनाना है, लेकिन एट द सेम टाइम एट द डिफरेंट पेज दे मेंशन कि कितने डायग्नोसिस आपको बनाने चाहिए उतने बनाने हैं। ऐसे लेवल नहीं है, ये क्या है नाम क्या है, ये मेटल जो नाम है नाम क्या है याद उसके That is what my confusion is. That could be dependent syndrome should be mentioned in the diagnosis. नहीं विड्रॉल That is what I'm asking correctly. Absolutely declare after withdrawal syndrome. विड्रॉल है ठीक है। आसान क्वेश्चन तुम्हारा क्वेश्चन क्या है कि हमें टोबैको का डायग्नोसिस मेंशन करना है नहीं करना है, ये क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन है विड्रॉल मेंशन करना है। सर अगर मेंशन करना है डायग्नोसिस कैसे नहीं mention पहले करना है? ये तो करो टोबैको Mention डिपेंडेंस करना है। सिंड्रोम हुआ है। हां पहले फर्स्ट अपनी डिपेंडेंस सिंड्रोम है, ठीक है। अगर कोई इसमें तो हिस्ट्री बोली नहीं है तो वो तो इस हिस्ट्री को हम डिस्कस नहीं कर सकते, बट इफ यू आर टेकिंग केस एंड यू आर वेरी क्लियर दैट दिस इज इंडिपेंडेंस पैटर्न देन यू हैव टू मेक इट। इस करंट केस में अगर वो सिर्फ टोबैको ले रहा है जस्ट आफ्टर ही इज चेजिंग स्मैक तो वो डिपेंडेंस पैटर्न नहीं हुआ। ओके डिपेंडेंस पैटर्न क्राइटेरिया कहां पे मिलेगा, कहां टॉलरेंस आई है, कहां विड्रॉल आई है, कहां आपको मतलब इग्नोरेंस ऑफ नॉर्मल एक्टिविटीज आई है, कहां इग्नोरेंस ऑफ रिलेशनशिप्स आई है, वो नहीं आई ना, तो उसका डिपेंडेंस हुआ ही कहां। आपको क्राइटेरिया पूरा हो जाएगा, आपको दो क्राइटेरिया चाहिए, आपको विड्रॉल और आपको टॉलरेंस और आपको मिल जाए। अगर हम जब भी निकोटीन डिपेंडेंस डायग्नोस कर रहे हैं तो आपको उनका क्राइटेरिया मिलता है, ठीक है। क्यों उसकी हेल्थ इफेक्ट नहीं होती है, तो हेल्थ इफेक्ट हो गया क्राइटेरिया टॉलरेंस वाले हो गया कॉमन क्राइटेरिया कंपल्सन हो गया क्राइटेरिया। तो अगर आपका क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है यू हैव टू मैच। और विड्रॉल सेट है नहीं दैट हैज टू बी डिपेंडेंट अपॉन कि हम पेशेंट से पूछ रहे हैं नहीं है, हम रूल आउट कर रहे हैं नहीं कर, इफ इट इज देयर वेदर मेंटल साइकोलॉजिकल और फिजिकल वे Psychological withdrawal. So just craving for it, there are no still be mentioned in the dependence. So withdrawal symptoms are mentioned correct, and supposedly sir he is not craving for it, but sir he is currently abstinent. So he might currently abstinent, but is not. if it is there you have So if he is taking just this और क्या मेंशन करें, अब नहीं ले रहा है एब्सेंट है तो कोई मैं ऑप्शन बचे नहीं मेंशन करें और क्या मेंशन जैसे हॉस्पिटल में आगे मिला है पहले ले पहले इससे नहीं दे रहा है तो अभी और क्या डाउट है, मतलब अब जो आपको पेशेंट मिलेगा अगर आप लेटर है तो आपको मेंशन करना है, ठीक है। विड्रॉल है या नहीं, विड्रॉल साइकोलॉजिकल भी हो सकता है, वो भी है, it has to be due to smoking. You have to be very clearly being able to differentiate that from any other symptom. You have to be able to say the case of anxiety disorder with tobacco dependence. So आपको you should have been clearly able to differentiate anxiety due to tobacco withdrawal from the anxiety which he has been suffering from. ठीक है, only then you will be able to. अगर नहीं फुलफिल हो रहा तो तब नहीं बोल सकते। usually along with smash so that this fumes of